Due to lockdown, you are not able to go to school. So here myself, Ravikant Sharma, as a science and maths teacher. So we start with the syllabus of class 10th. We start with the syllabus of class 10th. Subject science. Subject science. So you already know that there are three sections in science: physics, chemistry and bio. Physics, chemistry and bio. First of all, we start with the section physics. So first of all, write down or note down the number of chapters which are included in physics, that is chapter 10. In NCERT book, it starts from chapter 10. Light, reflection and refraction. Light, reflection and refraction. Chapter 11, human eye and colorful world. Human eye and colorful world. Chapter number 12, that one is your electricity. Chapter number 13, that one is your magnetic effects of electric current. Magnetic effects of electric current. Chapter number 14, that one is your sources of energy. Sources of energy. Chapter number 15, that is our environment. Our environment. Chapter number 16, that is management of natural resources. Natural resources. These are the chapters which are included in physics. But last three chapters, that is 14, 15 and 16, that are the chapters of environment. That are the chapters of environment, but also considered the part of physics. So note down all these chapters which are in the physics section. Wait for 1 minute, note down. Okay, fine. So first of all, बच्चे, we start with the chapter number 12, electricity. Chapter number 12, that is electricity. First of all, electricity. What is electricity? That is a source, or it is a important source of energy. It is important source of
एनर्जी. इट इज कंट्रोलेबल, इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं हम लोग. अब बच्चे नंबर ऑफ गैजेट्स आप लोग यूज करते हो, फ्रिज है, एसी है, फैन है, दैट ऑल आर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी. आवर इंडस्ट्री इज आल्सो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी. ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी आवर बिजनेस आर गोइंग ऑन. Without electricity, so we can say that without electricity today world is not possible. So बच्चे नंबर ऑफ क्वेश्चंस अराइज होते हैं. जैसे हमने टॉर्च का स्विच ऑन किया, बल्ब ग्लो कर गया. अब उस स्विच ने ऐसा क्या किया कि बल्ब ग्लो कर गया. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं, व्हेन वी स्विच ऑन द टॉर्च, हमने जब स्विच ऑन किया तो उस स्विच ने क्या किया कि बल्ब ग्लो कर गया. दैट प्रोवाइड्स अ कंडक्टिंग पाथ. दैट प्रोवाइड्स अ कंडक्टिंग पाथ. दैट्स व्हाई बल्ब ग्लो कर गया. सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी बुक, व्हाट डू यू मीन बाय एन इलेक्ट्रिक सर्किट? व्हाट डू यू मीन बाय an electric circuit? So answer is a closed conducting path. A closed conducting path is called an electric circuit. A closed conducting path is called an electric circuit. In this chapter we discuss with more terms, that is charge, potential difference, resistance, resistors, and heating effects of electric current. We discuss all these topics one by one. So before starting the electricity, we discuss a term. That one is your charge. First of all, note down this. What do you mean by electric circuit? That is a closed conducting path is called electric circuit. Note down. Okay. Now next term that we discuss under the chapter of electricity, charge. So what is charge, bache? You can perform an activity. Material used are a plastic cone, or you can take a plastic scale. That is better because it is easily available. Now bache, some pieces of paper. Some pieces of paper. When you rub the plastic scale with your dry hair, you see that it attracts small pieces of paper. Now ये pieces attract क्यों हुए? Why so? Because when you rub the plastic scale, a charge is produced. इस केस में बच्चे क्या हुआ? Charge produce हो गया. So charge की definition क्या mention कर सकते हैं? That is, it is a property of body. Definition of charge. It is a property of body due to which it feels attractive or repulsive. Due to which it feels attractive or
repulsive. If you want more clarification on charge, you can see the activity on my YouTube channel Prosperous Academy. That is done by my student Hitashia. Activity: how can you detect charge? You can see there. Fine. Now symbol of charge or unit of charge. Symbol of charge क्या है बेटा? Symbol of charge is Q and unit of charge is coulomb. That is denoted by C. Note down बच्चे. Okay. Now beta charge, how many types of charges? How many types of charge? So there are two types. One is positive, other one is negative. नाउ बच्चे यहां टर्म आती है कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं. लाइक मीन्स टू से दैट सेम चार्जेस repel each other. Repel. So we continue our lecture. That is chapter electricity. How many types of charges? How many types of charges? So there are two types of charges. First one is positive. Second is negative. Now बच्चे बात आती है कि like charges. Like means to say that same charges repel each other. Repel each other means to say that like charges क्या होंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे. On the other hand, unlike charges are different charges attract each other. Means to say that positive and negative they repel each other. On the other hand, positive negative and negative positive they attract each other. And symbol for charge, write down again. Symbol for charge is Q and unit of charge is coulomb. COULOMB. That is denoted by C. Note down. Okay, fine.
सो बच्चे इलेक्ट्रॉन पे वैल्यू क्या है चार्ज की, दैट इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, दैट इज योर 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. Now बात आती है बेटा, how many electrons constitute 1 coulomb of charge? Question is how many electrons constitute 1 coulomb of charge? You just try to find the answer. We should discuss, or we discuss in the next lecture. So if you like my lecture, then subscribe, like and share my channel Prosperous Academy. Thank you and have a nice day. Good morning students. So in my last lecture there is a question. Write down, calculate the number of electrons constitute 1 coulomb of charge. Means to say that कितने number of electrons मिलकर एक coulomb charge बनाएंगे. So here let's try to find out the answer. Now beta, you already know that charge on one electron, charge on one electron, that is equal to 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. In other words, if I say इतना चार्ज है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, मीन्स टू से दैट 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम चार्ज है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 1. सो इफ चार्ज इज 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb, then number of electrons, then number of electron is equal to 1. Now we have to find for 1 coulomb, we have to find for 1 coulomb. So here 1 coulomb, चार्ज कितना हो गया अब इस प्लेस पे 1 coulomb. If charge is 1 coulomb, then number of electrons, then number of electrons, that is equal to 1 upon 1.6 into 10 raised to power minus 19 into 1. Now let's try to find out बेटा. अब इस पावर को क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, that becomes positive. Means to say that we are left with 1 upon 1.6 into 10 raised to power 19. Now this power become positive. Now next step बेटा, इसका डेसिमल रिमूव करते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए. इसका डेसिमल रिमूव किया, इसका 10 भी क्या हुआ, रिवर्स होके ऊपर चला गया. That becomes 1 into 10 raised to power 19 into 10 raised to power 1, और you already write 10 upon क्या हो गया बेटा 16. Now you are left with 1 into 10 raised to power 20 upon 16.
नाउ 10⁻20 बेटा एज इट इज है, 1 को 16 से डिवाइड करते हैं, 1 को 16 से क्या करते हैं, डिवाइड, दैट इज 0, हियर इज अगेन 0, डेसिमल 1 0 more, 1 0 here. Now 16 6th 96. You are left with 4, again 0, 16 2s are 32, that are 8, again 0, 16 5s are 80. So you get 0.0625 into 10 raised to power 20. नाउ बेटा 2 डेसिमल में इस साइड पे रिप्लेस कर दूंगा, 2 डेसिमल 1 2 means to say that you get 6.25 into 10 raised to power 18 electrons. 6.25 into 10 raised to power 18 इलेक्ट्रॉन्स जब होंगे तो वो क्या करेंगे, 1 कूलम चार्ज बनाएंगे. नोट डाउन. ओके फाइन. नाउ बच्चे 6.25 into 10 raised to power 18 electrons constitute 1 coulomb of charge. Write down. So 6.25 into 10 raised to power 18 electrons constitute 1 coulomb of charge. So you can write that coulomb is a big unit of charge. Coulomb is a big unit of चार्ज. नोट डाउन बच्चे. Okay, fine. ना बच्चे चार्ज की बात हो गई. अब चार्ज मूव भी करते हैं, चार्ज रेस्ट पे भी है. मीन्स टू से दैट चार्ज आर स्टैटिक एंड चार्ज आर ऑल्सो इन द मूविंग स्टेट. मीन्स टू से दैट फ्लो, चार्ज कैन flow. On the basis of this बच्चे electricity can be divided into two types. First one is your static electricity. Second is your current electricity. Static means क्या होता है बेटा, that is at rest.
मीन्स टू से दैट इस केस में चार्जेस क्या हैं, आर एट रेस्ट, चार्जेस आर एट रेस्ट, राइट डाउन, चार्जेस आर एट रेस्ट. On the other hand, current electricity जो है बेटा, in this case charges are move on, means to say that charges are flowing. You can write charges are flowing. रेस्ट की बेटा मैंने एग्जांपल दी थी आपको, दैट इज प्लास्टिक स्केल, rub with small pieces of paper, small pieces of paper. Second, you can write second example, glass rod with silk cloth, glass rod with silk cloth. Third, you can write it as, that is ebonite rod, that is with woolen cloth, ebonite rod with woolen cloth. Now beta, by convention, charge on glass rod is positive. When you rub, charge on glass rod is positive, and charge on ebonite rod is negative. Charge on ebonite rod is negative. Now in this chapter basically we deal with the current electricity. We basically deal with the current electricity. Write down बच्चे. Okay, fine. नेक्स्ट टर्म आती है बच्चे आपकी इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट that is represented by symbol I. सिंपल डेफिनेशन क्या है बेटा इसकी, दैट इज rate of flow of charge, rate of flow of charge with respect to time. Now from here you can write down the formula, that is flow of charge with respect to time. So we can write it as I is equal to Q by T. And from here you can derive the unit of current. Now बेटा चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, एंड टाइम का यूनिट सेकेंड. So current, unit of current is ampere. So 1 ampere को डिफाइन करने के लिए you can write 1 ampere is equal to 1 coulomb upon 1 second. 1 coulomb upon 1 second. ये तो बात थी बच्चे करंट की डेफिनेशन की, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. नाउ बच्चे यहां पे आता है कि एम्पियर क्या है. Definition of unit of current, that is also a question in your book. Define unit of current. यहां पे बेटा कंफ्यूजन मत करना. अगर सिंपल आ जाए कि इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन करो,
तो आप क्या डिफाइन करोगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बट अगर आ गया कि डिफाइन यूनिट ऑफ करंट, सो हेयर यू डिफाइन 1 एम्पियर। सो 1 एम्पियर को क्या डिफाइन कर सकते हैं बेटा, दैट इज 1 एम्पियर इज इक्वल टू चार्ज flows through the circuit is 1 coulomb in 1 second. That current is said to be 1 ampere. Or we can write it as when charge of 1 coulomb, note down, okay, or we can write it as, define the unit of current, that is ampere, 1 ampere. So when 1 coulomb of charge flows through the circuit, in 1 second, that current is said to be 1 ampere. That current is said to be 1 ampere. Note down बच्चे। Now for the numerical purpose बच्चे, आपका फॉर्मूला है I is equal to Q by T। अब यहां पे चार्ज की वैल्यू गिवन है, टाइम की वैल्यू गिवन है, यू कैन फाइंड करंट। सपोज चार्ज की वैल्यू हम ले लेते हैं Q, दैट इज 2 कूलम, टाइम ले लेते हैं 2 सेकेंड। सिंपल एग्जांपल लेता हूं, यू हैव टू फाइंड द करंट। सो I is equal to Q by T, that is 2 upon 2, that is equal to 1 ampere answer. Now बच्चे, second formula you can derive, Q is equal to IT, T इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाए। नाउ करंट की वैल्यू गिवन है, सपोज I is equal to 2 एम्पियर, टाइम गिवन है 2 सेकेंड। सो Q is equal to IT, you can write it as 2 into 2, that is 4 coulomb. Now if you have to find time, then formula becomes T is equal to Q by I. अब अगर बच्चे Q दिया हो, चार्ज की वैल्यू दी हो मतलब 3 कूलम, करंट दिया हो 3 एम्पियर, you have to find T. So T is equal to Q by I. T is equal to Q by I. T इधर चला गया, I Q के नीचे आ गया। सो Q की वैल्यू आपको गिवन है 3 कूलम अपॉन 3। सो टाइम कितना आ गया बच्चे, दैट इज 1 सेकेंड। These are the 3 formulas for the numerical purpose. First one is I is equal to Q by T. Second is Q is equal to IT. Third one is T is equal to Q by I. बेसिकली हम इस
फॉर्मूले पे ही ज्यादा डिपेंड है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी और Q इज इक्वल टू आई टी। नोट डाउन बच्चे। ओके, in the next lecture beta we are discuss the term electric potential, and potential difference, सो थोड़ा सा बेटा इसको एनसीईआरटी बुक से सेल्फ रीडिंग करना। आफ्टर दैट वी डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप you will understand my lecture. So if you like my lecture, then please like, share and subscribe my channel Prosperous Academy. Thank you and have a nice day. Good day. Good morning students. Today we start with the topic potential difference. Write down potential difference. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बच्चे एग्जांपल लेते हैं। व्हेन यू स्विच ऑन द बल्ब विल ग्लो, मीन्स टू से दैट उस केस में क्या हुआ, जब आपने स्विच ऑन कर दिया चार्ज मूव करने लग गया और चार्ज फ्लो करने लग गया, दैट्स व्हाई बल्ब विल ग्लो। बट क्वेश्चन अराइज दैट what makes the electric charge to flow? Let us clear with the example. If we compare it with the flow of water, you know that water does not flow in a perfectly horizontal tube. In that case, one point और जो ट्यूब का वन पॉइंट है that is connected with the water tank that is kept at higher level. Second point उसका उससे lower होता है. So that creates the pressure difference and water will flow. Now same case here है बेटा कि इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो क्यों करता है, that is there is a difference of electric pressure. There is a difference of electric pressure or that is called potential difference. That is called potential difference. अब बच्चे बात आती है इसकी डेफिनेशन की. राइट डाउन डेफिनेशन. वर्क डन to move a charge from one point to another. Work done to move a charge from one point to another. That is V is equal to W by Q. Where symbols have their usual meaning,
potential difference is denoted by V. W is work done. W is work done. And Q is charge. अब बच्चे बात आती है इसकी यूनिट की. यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. Unit of potential difference is volt. From here we define 1 volt. 1 volt is equal to 1 joule upon 1 coulomb. 1 joule upon 1 coulomb. Here beta unit of work done is joule. साइड पे मेंशन कर लो आप. यूनिट ऑफ work done is joule, and unit of charge is coulomb. So here we write unit of work done, that is joule, and unit of charge, that is coulomb. From here you can derive the definition of 1 volt. Now note down बच्चे, then we write the definition of 1 volt. Note down. Okay, fine. Now beta 1 volt is equal to 1 joule upon 1 coulomb. So definition of 1 volt, write down definition of 1 volt. From here you can define 1 volt. When 1 joule of work is done, when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb. When 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb, that potential difference is called 1 volt. Note down बच्चे. Now बेटा for numerical purpose पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आपके पास है V is equal to W by Q, and unit of potential difference you know that 1 volt. From here you can derive two more formulas, that is W is equal to VQ. VQ, that is Q replaced to those sides. If you find out Q, then formula is W by V. In this case Q in the place of V and V in the place of Q. These are the formulas for the numerical purpose. Now बच्चे क्वेश्चन अराइज होता है numerical, that is if work done is 2 joule
to move a charge of 1 coulomb, then what is the potential difference? Then what is the potential difference? न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले बच्चे यू हैव टू राइट डाउन द गिवन वैल्यूज. गिवन वैल्यूज में क्या है? वर्क डन 2 जूल, दैट इज W इज इक्वल टू 2 जूल, एंड चार्ज दैट इज 1 कूलम, Q इज इक्वल टू 1 कूलम. नाउ जो आपको फाइंड आउट करना है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, सो V इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. नाउ यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला दैट इज V इज इक्वल टू W by Q. Put the values. V is equal to W2 Q1. You get the answer, that is potential difference is 2 volt. So V is equal to 2 volt. Note down बच्चे. ओके फाइन. नाउ बेटा अगर वैल्यू दी हो पोटेंशियल डिफरेंस की, पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज इक्वल टू 5 वोल्ट, चार्ज Q दैट इज इक्वल टू 2 कूलम. You have to find the work done, W. Then W is equal to VQ. You can directly apply the formula. V की value that is 5 into 2. Charge की value that is 2 coulomb. You get the answer, W is equal to 10 joule. Second case बच्चे, Q is equal to W by V. इन दिस केस अगर वर्क डन की वैल्यू गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस की गिवन है, यू हैव टू अप्लाई देन दिस फॉर्मूला. सपोज टेक द एग्जांपल, W इज इक्वल टू 2 जूल, V इज इक्वल टू 3 वोल्ट, Q इज इक्वल टू क्या है बेटा? दैट इज W बाय V, 2 बाय 3. आंसर इज 0.36 था, 18 against 6 that is continue. चार्ज क्या आ गया? 0.66 और अप्रोक्सीमेटली आप क्या ले सकते हो? 0.67 कूलम. जिस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो बेटा, उसके साथ उसका ही यूनिट अप्लाई करना है इन द एंड. इफ यू डू नॉट अप्लाई द unit of that physical quantity, then half marks is cut off. So take care about this. Note down बच्चे. ओके फाइन बच्चे. ना बच्चे बात आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की. In this case, the definition is work done to move
a charge from one point to infinity. In case of potential difference, that is one point to another point. Only the difference is here that we put one point to infinity. So this is the definition of electric potential. Now beta, you already know about the term electric current. Or simply current. Symbol is I. And potential difference, that is V. Now the instrument that are used to measure electric current, that is ammeter. That is ammeter. An instrument that is used to measure potential difference, that is your voltmeter. Voltmeter. Ammeter has low resistance. It has low resistance. On the other hand, this has high resistance. This has high resistance. Ammeter is always connected in series, and voltmeter, that is always connected in पैरेलल. सीरीज और पैरेलल बच्चे अभी इतना ही लर्न कर लो, इसके बाद इसका कॉन्सेप्ट डिटेल में आएगा. On the other hand, symbol for ammeter is this one, and symbol for voltmeter, that is this one. Note down बच्चे. Okay, fine. Now some questions are there on the basis of potential difference. Some questions are there on the basis of potential difference. That is, first question, name a device. Name a device that helps to maintain potential difference. Answer is a cell or battery. A cell or battery. Battery is called combination of cells.
combination of cell. नोट डाउन बच्चे. Second question, what is meant by saying that potential difference is 1 volt. Potential difference is 1 volt. So here you define 1 volt. Basically question is that you define 1 volt, not the definition of potential difference. So answer is 1 volt is equal to 1 joule upon 1 coulomb. So here when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb, that potential difference is said to be 1 volt. You already done this before this beta. Note down बच्चे. Okay. Next question है बच्चे, how much energy is given to each coulomb of charge, coulomb of charge through a 6 volt battery. 6 volt battery. In this case, how much energy? So you have to find W first of all. Given to each coulomb means to say that charge की value क्या होगी बेटा? That is Q is equal to 1 coulomb. Through a 6 volt battery, potential difference is 6 volt. Now you know that V is equal to W by Q. From here W is equal to क्या आ गया बच्चे? That is equal to VQ. W is equal to VQ. Put the values. W is equal to, potential difference is 6, charge is 1 coulomb, that is W is equal to your 6 joule. So that much work or that much energy is required to move a charge of 1 coulomb through a 6 volt battery. Note down beta.
Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाउ मच वर्क इज डन, how much work is done to move a charge of 2 coulomb across 2 points having potential difference 12 volt. Now write down the given values बच्चे. Answer is V is equal to 12 volt and charge, that is Q, 2 coulomb. You have to find W. Now you have the formula V is equal to W by Q. So from here you get W is equal to V Q. Put the values. V is equal to 12 volt and charge is equal to 2 coulomb. That is 12 to the 24. So you get W is equal to 24 joule. That one is the answer. Note down बच्चे. Fine बेटा. Next topic, that is Ohm's law. Ohm's law. We discuss it in the next lecture beta. So just go through it, and if you like my lecture, then please like, share and subscribe Prosperous Academy. That is my channel name. Please like, share and subscribe. Thank you and have a nice day. Thank you very much beta. Good morning students. Hope you all are good, and congrats to all dear students of class plus 2 and 10th for their good result and scoring such a good marks. Now here we start with our next topic of class 10th, that is Ohm's law. Write down Ohm's law. This topic is very important beta. First of all, this law is given by a German physicist named George Simon Ohm. It gives the relationship between potential difference V and current I. Now beta, according to this law,
according to this law. What it is? Potential difference across 2 points of conductor. Across 2 points of conductor is directly proportional to the current flowing through it. Flowing through it. In other words, you can write it as V is directly proportional to I, or V upon I is equal to constant. Or in other words, बच्चे, you can write it as, when you remove this symbol, here you place equal to sign, you put a constant, that is R. So you get V is equal to IR. Or here R is a constant, that is called resistance of the conductor. That is called resistance of the conductor. And SI unit of resistance is SI unit of resistance is ohm, represented by the symbol this one. Note down the change. Okay, beta. Now you learn about that is V is equal to IR, or V upon I is equal to constant. That is R and is called resistance of the conductor. Now bache, when you draw the graph between V and I, when you draw the graph between V and I, you get a straight line starting from the origin. You get a straight line starting from the origin. That is graph for Ohm's law. Graph for Ohm's law. Or between V and I. You can write it as between V and I.
ना बेटा एक चीज यहां पे याद रखना कि करंट जो है ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस है। करंट किसकी वजह से है? ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट बेटा आता है दैट इज सर्किट डायग्राम फॉर ओम्स लॉ। सर्किट डायग्राम फॉर ओम्स लॉ। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम बच्चे। फर्स्ट ऑफ ऑल this is here, take 2 points x and y. From here you join with the voltmeter, that is V. Further you connect with the ammeter, then with key K. Now from here beta you just connect with the pattern. Just draw the dotted lines and here join with this and draw the direction of current. Now beta here you see that voltmeter is connected in parallel and ammeter is connected in series. First you here write down V positive and V negative. Now when you find the ratio of V and I, you just see that the ratio of this is constant. From single cell, from 2 cells, from 3 cells, from 4 cells. So here that is you get a straight line graph. You can perform this experiment in your labs when you get to school and by joining this circuit. Draw the graph bache and draw the circuit diagram on your notebook. Wait for 2 minutes. Here just write it as bache R, resistance. Okay, fine beta. Now बच्चे बात आती है from here resistance R. Resistance R.
resistance क्या है बेटा? When you compare it with friction, you know that friction that just opposes the motion of the body. Same in the case of electricity, बच्चे क्या है? That obstruct to the path of the current, or you can write it as obstruction to the flow of current, to the flow of current. That is a simple definition of resistance. Now बच्चे, from here you get the formula R is equal to V upon I. And I already tell you that SI unit of resistance is ohm. SI unit of resistance is ohm, represented by the symbol this one. Now from here you can define 1 ohm. You get 1 ohm is equal to 1 volt upon 1 ampere. Potential difference का SI unit that is volt, current का SI unit that is ampere. So 1 ohm is equal to 1 volt upon 1 ampere. From here you can write the definition of 1 ohm. You get the question in the form that define the unit of resistance. Now बच्चे 1 ohm का definition क्या बन जाएगा? When potential difference is 1 volt and current flowing through the circuit is 1 ampere. That resistance is said to be 1 ohm. Note down beta. Here you just draw one thing more, that diagrammatic symbol of resistance, that is this one, represented by R. Note down बच्चे.
Okay, fine beta. Now you learn about the Ohm's law and resistance. Now next term, that is, or next topic, that is factors affecting the resistance. Affecting the resistance. Means to say that resistance किस पे डिपेंड करता है बेटा? फर्स्ट फैक्टर है दैट इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर. लेंथ ऑफ द कंडक्टर, that is L. Second one is area of cross section. Area of cross section, that is A. Third is temperature. Fourth one is nature of material. Nature of material. Note down बच्चे. ना बेटा आपको ये तो पता चल गया कि रेजिस्टेंस इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बट ये इसको किस तरह इफेक्ट करते हैं, लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल जो रेजिस्टेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ. राइट डाउन, रेजिस्टेंस इज directly proportional to length, that is L of the conductor. Or you can write it as R is directly proportional to L. To just equation 1. Second thing, area of cross section, that is resistance is inversely proportional to the area of cross section. Cross section, that is resistance is inversely proportional to 1 upon A. Now you here see that directly proportional and inversely proportional symbols for both are same, but difference is that when you write directly proportional, direct means to say that in Hindi or Punjabi you can say that सीधा और सिद्धा. तो बच्चे जब लेंथ इंक्रीज करेगी तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा. ऑन द अदर हैंड जब लेंथ डिक्रीज करेगी तो रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. इनवर्स क्या है, उल्टा उसका. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज किया तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा. इनवर्स उल्टा, डायरेक्ट सीधा. One quantity increase, second is also increased. One quantity decrease, second is also decrease. इनवर्स में क्या हो जाएगा, एक डिक्रीज तो दूसरा इंक्रीज, एक इंक्रीज तो दूसरा डिक्रीज. नोट डाउन बेटा. Okay, now you just mark it at 2. Now beta from here combine first and second. Combine
first and second, you get resistance is directly proportional to L into 1 upon A, or you can write R is directly proportional to L upon A. When you remove this sign, I already tell you that here we put when equal to sign, we apply a constant, that is here is rho. You get R is equal to rho L upon A. Where rho is the resistivity of the conductor. Resistivity of the conductor, or that is constant of proportionality. Note down beta. Just learn about this, that rho is the resistivity of conductor, or you can write spelling also, that is RHO, rho. Note down बच्चे. Okay, fine beta. Now beta, you get R is equal to rho L upon A. Rho L upon A, where rho is RHO, resistivity of the conductor. Resistivity of the conductor. First of all, बच्चे, from this formula you can find the unit of rho. You can find the unit of rho. From here you get rho is equal to A move to this side, L move to bottom, और L denominator में आ जाएगा बच्चे. That is, you get rho is equal to R into A upon L. Now SI unit of resistance is ohm. Area of cross section is meter square and length, that is meter. Now you get, that is meter square को क्या लिख सकते हैं बेटा, मीटर इंटू मीटर अपॉन मीटर, ये लेंथ का. इसको आपने मेंशन नहीं करना, जस्ट फॉर योर सिंप्लिसिटी एम से एम कैंसिल.
You are just left with ohm meter. You are just left with ohm meter. So SI unit of resistivity is ohm meter, or you can write in this. Note down beta. Okay, fine, bache. In the next topic, we discuss about the definition of resistivity and what is the resistivity of alloy and metals, how it vary with temperature. You just go through the topic or definition of resistivity. We are left with some few topics of electricity more. Just doing the numericals then and just revision. Then we finish the chapter. And if you like my lecture, then please subscribe, like, share. Prosperous Academy. Thank you and have a nice day. Good morning, students. Hope you all are good. In my last lecture, we are left with the topic resistivity. So here we again continue with the topic resistivity. Note down beta, resistivity. So you already know about the formula, that is R is equal to rho L by A, where rho, that is RHO, that is resistivity. Resistivity of conductor. L is length of conductor and A is the area of cross section. Area of cross section of conductor. Now from here beta you can find the value of rho, that is resistivity. So you get rho is equal to RHO, that is area. इस साइड पे बेटा लेंथ क्या हो जाएगी, इसके नीचे चली जाएगी. So you get R into A upon L. Now from here you can define resistivity. If you suppose the value of area of cross section, that is A is equal to 1 meter square and length is equal to, you assume the value 1 meter. In other words, you can say that unit length and unit area of cross section. Unit means 1. Now from here you get
When you put the value of area 1 here, 1 here, you get rho is equal to R. Rho is equal to R. Because you here put the values R into 1 upon 1. You do not mention here. For your simplicity, I mention. Now, beta, from here you can define resistivity. Note down resistivity of a conductor is the resistance of conductor of unit length and unit area of cross section cross section. Right on बच्चे. Okay, fine. Or you can write in another way, that is resistivity of a conductor. Resistivity of a conductor is the resistance of unit length and unit area of cross section of conductor. Both are right. You can write in both ways. Note down beta. Okay, done beta. ना बच्चे बात आती है इसकी यूनिट की. रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है? That is topic is now unit of resistivity. So from here, first of all we start with the basic formula. R is equal to rho L upon A. From here you get rho is equal to R into A upon L. Now you already know that unit of resistance is ohm, area is meter square,
length is meter. From here you get 1 m से 1 m cancel हो जाएगा, you are left with 1 m only. So you get that is ohm meter. Here in this way ohm meter into meter upon meter. Meter से meter cancel, that is you are left with ohm meter. So SI unit of resistivity is SI unit of resistivity is ohm meter. Note down बच्चे. Okay, fine. Now बच्चे बात आती है मेटल्स और एलॉयज की रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या है. Means to say that write down some points or important points. Metals and alloys. Metals and alloys have low resistivity. Have low resistivity. So they are good conductor of electricity. Good conductor of electricity. ना बच्चे जिनकी रेजिस्टिविटी कम होती है, जो पॉइंट याद करने वाला है यहां से, जिनकी रेजिस्टिविटी कम होती है वो क्या होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सेकेंड पॉइंट, इंसुलेटर have resistivity between 10 raised to power 12 to 10 raised to power 17 ओम मीटर. ये वैल्यू जस्ट आप एज इट इज ही लर्न करोगे, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता बेटा. नोट डाउन. थर्ड पॉइंट आता है बच्चे रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी. रेजिस्टेंस and resistivity change with temperature. Change with temperature. Note down बच्चे.
Okay. Fourth point is alloy. Alloy basically बेटा क्या है? That is mixture of metals. Alloy क्या है? That is mixture of different metals. Do not alloys लिख लो बेटा यहाँ. Alloys do not burn or oxidize readily at high temperature. Readily at high temperature. So they are used in electrical heating devices. Electrical heating devices like हीटर हो गया बच्चे आपका, लाइक हीटर, गीजर, टोस्टर. नोट डाउन बेटा. ओके फाइन बच्चे. नाउ बेटा फोर्थ पॉइंट के बेस पे आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, वो क्वेश्चन आप नोट कर लो. दैट इज क्वेश्चन इज वाई आर द coils of electric toasters or irons. Electric toaster or iron. Iron means press. Made of alloy. Rather than pure metal. So in the answer you can write this point. इस क्वेश्चन का आंसर that is fourth point. This one. Alloy क्या होता है बेटा? हाई टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं करता. इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस. हीटिंग डिवाइसेस आपकी गीजर है, हीटर है, टोस्टर. और नेक्स्ट पॉइंट आप क्या मेंशन कर सकते हो बेटा इसमें? रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय
is higher than its constituent metals. Its constituent metals. Resistivity of alloy is higher than its constituent metals. Write down the check. ये पॉइंट भी बेटा आप मेंशन कर लेना. दिस वन, दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट इन द आंसर. नोट डाउन बच्चे. Okay, fine. Now बच्चे जो बल्ब का फिलामेंट होता है that is made up of tungsten. Note down, filament of bulb is made up of tungsten. फिलामेंट बेटा बल्ब में आपकी थिन सी वायर होती है, वही बेसिकली ग्लो करती है व्हेन करंट पास होता है. नोट डाउन बच्चे. एक पॉइंट बच्चे जो आप और याद रखोगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी have low resistivity, have low resistivity. नोट डाउन बेटा. एंड बिल्कुल इसके अपोजिट क्या है बेटा? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी have high resistivity. Means to say that जिनकी resistivity low है, they are good conductor, उनसे इलेक्ट्रिसिटी इजिली पास हो सकती है. जिनकी resistivity high है, they are bad conductor और poor conductor, उनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती. They are also called insulator, in other words, insulator. नोट डाउन बच्चे.
ओके फाइन बच्चे, one more question is here. Will current flow more easily through a thick wire, or thin wire, of same material means to say that वो same material की बनी हुई है, and why? Now बेटा इस क्वेश्चन का आंसर that is on the basis of you already learn about that resistance is inversely proportional to the area of cross section. इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग मैंने एक्सप्लेन किया था कि एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज होती है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी क्वांटिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी. ऑन द अदर हैंड अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी क्वांटिटी सेकंड क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी गिव द आंसर. अब बच्चे रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की. सो थिक वायर का एरिया क्या हो गया, ज्यादा हो गया, मोर. एरिया ऑफ, in short I will explain here, area of thick wire is more. अब बच्चे इसका एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया. मीन्स टू से दैट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज लेस. नाउ रेजिस्टेंस लेस हो गया तो करंट क्या कर सकता है, इजिली फ्लो कर सकता है. सो करंट कैन इजिली फ्लो. सो इन शॉर्ट यू कैन गिव द आंसर इन दिस वे. थिक वायर का एरिया क्या होता है, ज्यादा हो गया इन कंपैरिजन टू द थिन वायर. सो उसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम. रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया. सो करंट क्या कर सकता है, इजिली थिक वायर से फ्लो कर सकता है और थिक वायर से ही करंट ज्यादा फ्लो करेगा. दैट इज द आंसर. नोट डाउन बच्चे. ओके फाइन बेटा. नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. कॉम्बिनेशन ऑफ resistors or resistance. Combination of resistors. Or you can write it as resistance. In some books resistance is mentioned, in some resistor is mentioned.
ना बेटा आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि करंट किस पे डिपेंड करता है, दैट इज डिपेंड अपॉन V इज इक्वल टू आई आर है बेटा। I क्या हो गया V बाय R, मीन्स टू से दैट करंट आपका पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अब बच्चे बात आती है कि इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में जो आप यूज करते हो उनके सर्किट बोर्ड पे रेजिस्टर्स को डिफरेंट वे में कंबाइन किया जाता है। अब बच्चे उन रेजिस्टेंस को कैसे कंबाइन करते हैं, नाउ वी डिस्कस अंडर दिस टॉपिक। सो देयर आर टू वेज, there are two methods or two ways of combining resistance. फर्स्ट वन है बच्चे रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन series. Second is resistance in parallel. Resistance in parallel. Note down बच्चे। Good morning students. Hope you all are good. Today we start with the topic combination of resistance. Note down beta, combination of resistance. So topic start करने से पहले बेटा you already know that Ohm's law V is equal to IR एंड जो I है दैट इज इक्वल टू V बाय R, और करंट की वैल्यू आपकी किस पे डिपेंड करती है, दैट डिपेंड्स अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. नाउ हियर वी आल्सो सी दैट हाउ we can apply Ohm's law in combination of resistance. Second thing, resistance बच्चे कितने वेज में कंबाइन हो सकता है. डिफरेंट गैजेट्स हैं, उनके सर्किट बोर्ड पे डिफरेंट वेज में रेजिस्टेंस कंबाइन होते हैं. सो रेजिस्टेंस जो है दैट इज कंबाइंड इन टू वेज. रेजिस्टेंस can be combined in two ways. First one is resistance in series. Resistance in series. Second is resistance in parallel. Note down बच्चे, we discuss one by one in detail. Note down. Okay, fine. So first we start with resistance in series. Note down बच्चे, resistance in series. Resistance in series.
First of all, draw the diagram, that is this one. Just combine with a cell and a key. Positive, negative, draw the direction of current, that is I. Here resistance R1, R2, R3. Mark the points, that is A, here B, C, D. Now beta, from A to B, your potential difference is V1. Across resistance R1, potential difference is V1. And across resistance R2, potential difference is V2. Across resistance R3, potential difference is V3. Draw the diagram, बच्चे. And total potential difference from A to D, that is your V. And resistance, total resistance, that is R. Now beta, in series, total potential difference V, that is equal to total potential difference. Total potential difference V, that is equal to V1 plus V2 plus V3. Now here, according to Ohm's law, you have V is equal to IR. Now beta, across resistance R1, potential difference V1. V1 is given by, that is equal to IR1. And V2 is equal to IR2. And V3 is equal to IR3. V3 is equal to IR3. Now beta, put the value of V, V1, V2, V3 in equation first. इसको आप सपोज कर लोगे फर्स्ट इक्वेशन. When you put the values in place of V, that is IR is equal to, in place of V1 you write IR1 plus IR2 plus IR3. From here you see that I is common in 3. So next step, IR is equal to, I common आ गया बेटा, you are left in the bracket, that is R1, R2, R3. Now here I is cancelled with I. You are left with R is equal to R1 plus R2 plus R3. That is a final expression for resistance in series. Note down beta.
Okay, fine. Now next topic, that is resistance in parallel. Note down बच्चे, resistance in parallel. First of all, draw the diagram again. That is just combine with a cell and a key, that is positive, negative, K. Draw the direction of current, that is I. Now you see that बच्चे, that is resistance R1, R2, R3. Now here from resistance R1 current is I1, from R2 current is I2, from R3 current is I3. Here again, then total current becomes again I. You draw the diagram. Okay, now you see in the diagram that total current I, that is equal to I1 plus I2 plus I3. So write down total current that is I is equal to I1 plus I2 plus I3. Now you already know that according to Ohm's law, V is equal to IR. But here we want the value of I. So from here I is equal to R beta इसके नीचे चला जाएगा, that becomes I is equal to V by R. Now you write down the values of I1, I2, I3. You suppose this equation as a first number. Now value of I1 across resistance R1, that is I1 is equal to V upon R1 and I2 is equal to V upon R2 and I3 is equal to V upon R3. Now you have the values of I, this one, I1, I2, I3. Put all these values in equation first. You get V by R is equal to V by R1 plus V by R2 plus V by R3. From here again V is common. So we write it as, in the next step, V by R is equal to, V common beta, you are left with in the bracket 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. So here we cancel both sides. You are left with 1 upon
R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. That is the final expression for resistance in parallel. Note down it all. Okay, fine, बच्चे. So beta, on the basis of combination of resistance, there is a one question that is very important. Question is that what are the advantages of connecting electrical devices in parallel. Instead of connecting them in series. Connecting them in series. So इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पैरेलल में कंबाइन करने के क्या एडवांटेजेस हैं इन कंपैरिजन टू द सीरीज. नाउ बेटा, यू ऑलरेडी डन द एक्सप्रेशन that is series. In series, you are with the expression that is R is equal to R1 plus R2 plus R3, and in parallel you are with the expression 1 upon R is equal to 1 upon R1, 1 upon R2, 1 upon R3. So beta, we prove by example, that is, if we suppose the value of R1 2 ohm, R2 same 2 ohm, R3 again 2 ohm. So total resistance in this case is R is equal to 2 plus 2 plus 2, that is equal to 2 4 6 ohm. But in case of parallel, if you put the same values, you are with the expression 1 upon 2 plus 1 upon 2, 1 upon 2, that is 2, 1 plus 1 plus 1, that is 3 upon 2. You are with the value, you got the value, that is 1.5 ohm. So you just see that in case of series, total resistance increased, but in parallel total resistance decreased. So current flow in parallel with much ease, means to say that in parallel current can flow very
easily because overall resistance is less in case of parallel. Note down beta. So you can write here in parallel current can easily flow. Current can easily flow because overall resistance is less. Note down beta. Okay, fine. Second point क्या है बेटा? In series, if one electrical appliance stops working, if one electrical appliance stops working, then all other appliances also get stopped. Then all other appliances also get stopped. But in parallel, if one electrical appliances stop working, but all other electrical appliances are working. Note down beta. Next point beta, in parallel, all electrical appliances get the same voltage. As that of the power supply.
But in series, all electrical appliances do not get the same voltage. In series, all electrical appliances do not get same voltage. Note down beta. Okay, fine. Now beta, on the basis of this point, you can define or you can explain with an example. That is, if one electrical appliance stops working, then all other appliances also get stopped. You already see that fairy lights. Fairy lights क्या है बेटा? जो आप दिवाली या अदर फेस्टिवल पे जिसको आप पंजाबी में बोलते हो लड़ियां, that are fairy lights. Fairy, पंजाबी में आप बच्चे इसको बोलते हो लड़ियां. अब बच्चे इसमें आपने देखा होगा कि when one bulb gets fused और उसका सर्किट जब ब्रेक होता है तो all other bulbs are also stopped and electrician takes a number of electrician take lot of time to recover or to repair this. So you can give the example in series, this one, fairy lights. Note down बच्चे. Okay, fine. Now beta, that is the explanation of combination of resistance. Next topic, that is electric power. Electric power. You just go through this topic. We discuss it in the next lecture. Hope you all like my lecture and you understand well. So if you like my lecture, please subscribe, like and share my channel Prosperous Academy. Thank you and have a nice day. Good morning students. Hope you all are good. Today we start with the topic electric power. Note down beta. Electric power. Now beta, first of all, if we talk about power in a layman language, power, that is your rate of doing work with respect to time. But here we discuss about the electric power. So electric power, that definition is rate at which work is done by an electric current, with respect to time.
Now beta here work done with respect to time. So formula for power becomes P is equal to W by T. From here we can derive different formulas that are used for numerical purpose. Now बच्चे you already learn about the potential difference. So according to the definition of potential difference, that is V is equal to work done upon quantity of charge transfer. So from here you get W is equal to V into Q. Just put the value of W from here and put in this expression. The formula becomes V into Q by T. In the place of W, you just put V into Q. Now beta, according to the definition of current, I, you know that symbol of current is I is equal to Q by T. Definition क्या है? Rate of flow of charge with respect to the time. So from here, that is Q is equal to IT. T move to this side. So again put the value of Q is equal to IT in this expression here. So V into I into T upon T. Now beta T से T cancel. You are left with the expression P is equal to V into I. Note down beta. Okay. Now beta again according to Ohm's law. According to Ohm's law, V is equal to IR. Again we put the value of V here. P becomes V की place पे, that is IR into I. You are with the expression that is I square R. Now again from here, if you find the value of I, R क्या चला जाएगा? V के नीचे चला जाएगा. That is I की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? V by R. Again put the value of I here. You are with the expression V square by R square into R. R से R एक कैंसिल हो जाएगा. You are left with 1R or you have the formula P is equal to V square R. So these are the different formulas that you used for numerical purpose. वहां पे आपको सीधा पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दे देंगे, क्वेश्चन में रेजिस्टेंस की वैल्यू दे देंगे. आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा पावर फाइंड आउट करो. सो यू अप्लाई डायरेक्टली दिस फॉर्मूला. और करंट की वैल्यू दे दी, पोटेंशियल डिफरेंस की दे दी, तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो. पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, चार्ज दे दिया, टाइम दे दिया, अगेन दिस फॉर्मूला यू कैन अप्लाई. वर्क डन दिया, टाइम दिया, डायरेक्टली यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड फाइंड आउट द पावर. नोट डाउन बच्चे.
Okay, fine beta. Now beta, you just learn about P is equal to VI. P is equal to V into I. From here you can define the SI unit of power, that is watt. First of all, write down unit of power is watt, W-A-T-T. Now better definition of 1 watt. 1 watt is equal to, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा 1 वोल्ट, एंड करंट का यूनिट यू ऑलरेडी नो दैट एम्पियर, सो करंट बिकम्स 1 एम्पियर. 1 watt is equal to 1 volt into 1 ampere. Write down beta. So from here 1 watt is when or if potential difference, if potential difference of 1 volt causes a current of 1 ampere. That is, potential difference of 1 volt causes a current of 1 ampere. Then power consumed is said to be, power consumed is said to be 1 watt. That is the definition of 1 watt. Write down beta. Good morning students. Hope you all are good. Today we start with the topic electrical energy. Write down beta. Electrical energy. First of all, बच्चे, if we talk about the energy, that is ability to do work. In simple layman language, if we define energy, that is ability to do work. But here we define electrical energy, so it's a little bit different from energy. Electrical energy, that is denoted by E, and that is equal to power P into time. That is, P is power and T, that is time. So you can write it as E is equal to P into T. That is the formula of electrical energy. So from here, electrical energy, that is depend on
electrical energy consumed by electrical appliance. Consumed by electrical appliance depends on फर्स्ट क्या आ जाएगा बेटा, दैट इज P, पावर रेटिंग ऑफ द अप्लायंस. फर्स्ट वन इज पावर रेटिंग ऑफ द अप्लायंस. Second factor, that is time for which it is used. Time for which it, that is appliance, is used. Note down beta. Then we discuss these factors in detail. Okay, fine. Now beta, first factor, that is power rating of appliance. पावर रेटिंग से मीनिंग क्या है बेटा आपका, आप मार्केट गए, दैट इज 60 वॉट बल्ब एंड 9 वॉट एलईडी. हम प्रेफर किसको करेंगे, वी प्रेफर द 9 वॉट एलईडी बिकॉज वी नो दैट कंजप्शन ऑफ 9 वॉट एलईडी इज लेस देन द 60 वॉट बल्ब. सो पावर रेटिंग क्या है, उस बल्ब का पावर रेटिंग 60 वॉट है और एक एलईडी का पावर रेटिंग 9 वॉट, बट हम प्रेफर किसको कर रहे हैं, दैट वी प्रेफर 9 वॉट एलईडी बिकॉज कंजप्शन ऑफ 9 वॉट एलईडी इज लेस देन द 60 वॉट बल्ब. सेकेंड फैक्टर, यू क्लियर अबाउट दैट टाइम फॉर विच इट इज यूज्ड. अब बच्चे कोई भी अप्लायंसेस आप कितनी देर के लिए, कितने टाइम के लिए यूज करते हो, उसकी कंजप्शन भी उतनी ही होगी, दैट इज अकॉर्डिंग टू द टाइम. अगर उसके वो ज्यादा टाइम के लिए यूज करते हो तो उसका कंजप्शन क्या है, ज्यादा है. अगर कम टाइम के लिए यूज करते हो तो कम है. दीज आर द टू फैक्टर्स. एंड नेक्स्ट वन, एसआई यूनिट. एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी is joule. एनर्जी बेटा किसी भी फॉर्म में हो उसका यूनिट क्या होगा, जूल होगा. फ्रॉम हेयर यू कैन डिफाइन 1 जूल. फर्स्ट नोट डाउन, देन वी डिफाइन 1 जूल. Okay.
Now note down the definition of 1 joule beta. फ्रॉम हेयर बच्चे पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट. दैट इज 1 वॉट. टाइम का दैट इज ऐसा यूनिट हम क्या कंसीडर करते हैं? 1 सेकेंड. सो 1 जूल इज डिफाइंड एज 1 joule is defined as when appliance of 1 watt is used for 1 second. Note down बच्चे. Okay, or you can write it as 1 joule is the amount of electrical energy consumed when an appliance of 1 watt is used for 1 second. Both are right beta. Note down. Okay, fine. Next topic that we start, commercial unit of electrical energy. Commercial unit of electrical energy. सो बच्चे कमर्शियल यूनिट क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का? दैट इज किलोवाट आवर. किलोवाट आवर is the commercial unit of energy. Now beta इस किलोवाट आवर को we convert it into joule. How? Just see, 1 किलोवाट आवर का मीनिंग क्या हो गया बेटा? That is 1 kilowatt for 1 hour. 1 kilowatt for 1 hour. Now बच्चे 1 किलोवाट में वाट कितने होते हैं? That one is 1000. So 1 kilowatt is equal to 1000 watt into 1 hour में सेकेंड बेटा यहां मेंशन कर लो आप. 1 किलोवाट is equal to 1000 watt and 1 hour
is equal to 3600 second. That is 60 into 60. 3600 second. So write down here 1 hour की place पे 3600 second. Now बच्चे जो आपका watt है that is equal to joule upon second. Watt is equal to joule upon second. So here 1000 watt के प्लेस पे क्या कर दिया मेंशन 1000 जूल अपॉन सेकेंड इनटू 3600 सेकेंड. नाउ आपका सेकेंड से सेकेंड कैंसल. यू आर लेफ्ट विथ 1000 into 3600 joule. That is equal to 3650 joule, or you can write it as 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 raised to power 6 joule. That one is the standard value. Note down below. Okay, so this is about the electrical energy. Good morning students. Today we start with the next topic. That one is heating effect of electric current. Note down बच्चे, heating effect of electric current. Now beta here two words. That one is heating effect. Second word that we used is electric current. Means to say that current की वजह से कुछ क्या हो रहा है, कोई गैजेट या कोई appliances गर्म हो रहा है. So definition becomes when electric current is passed through high resistance wire. It gets heat up, and this is called heating effect of electric current. This is called heating effect of electric current. आपने बेटा सभी ने देखा होगा ब्लोअर या हीटर या रोड होती है, गीजर रोड, जो पानी को गर्म करती है, ऑलवेज इस शेप में होती है. वो वायर कभी भी स्ट्रेट नहीं होगी. ऑलवेज ब्लोअर में, गीजर में, जो आप रोड यूज करते हो वाटर को गर्म करने के लिए, ऑलवेज इन दिस शेप. बेसिकली इसमें करंट का फ्लो क्या होता है, स्लो होता है, और करंट वहीं पे रुक जाता है, और उसकी वजह से ये वायर क्या होती है, वाइट ग्लो करने लग जाती है और हीट अप होने लग जाती है. यू कैन चेक द फिलामेंट ऑफ बल्ब. That is in the case of glass case. That is always a thin wire but in this shape.
वो बहुत थिन होगा बट इन दिस शेप होगा. So that is the heating effect of electric current. We discuss about the formula. Just note down the definition. Okay. नेक्स्ट बच्चे इसका फॉर्मूला. सपोज चार्ज Q moves against potential difference V. Moves against potential difference V. Then in this case work done is given by W is equal to V into Q. You already know that V potential difference का definition क्या है? Work done upon quantity of charge transferred. From here W is equal to क्या आ गया बेटा? V into Q. अब बच्चे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V is equal to IR and Q is equal to IT. Here you know that Ohm's law V is equal to IR, that is from the definition of current. I is equal to Q by T, that is flow of charge with respect to the time is called current, and from here Q की वैल्यू क्या आ गई बेटा? IT. Now put these value in equation first. You are with the expression W is equal to V के प्लेस पे क्या आ गया बेटा? IR and Q की प्लेस पे IT. So expression become I square RT. नाउ बेटा जो वर्क डन हो रहा है आपका बेसिकली वो किस फॉर्म में हो रहा है? हीट की फॉर्म में हो रहा है. करंट क्या कर रहा है? बेसिकली उस गैजेट को, उस अप्लायंस को गर्म कर रहा है. मीन्स टू से दैट वर्क डन इस फॉर्म में है, हीट की फॉर्म में. सो W इज इक्वल टू H. You are with the formula that is H is equal to I square RT. Symbols have their usual meaning. This one is the formula used for heating effect of electric current. That is H is equal to I square RT. Where I is current, R is the resistance, T is the time. Note down the check.
ओके फाइन बेटा. Next topic that is also based on heating effect of electric current. That one is practical applications of heating effect of electric current. Note down बच्चे. Now first application that is in electrical appliances. फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे आप जितने भी गैजेट्स यूज करते हो, सपोज हीटर, गीजर, ब्लोअर, और देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, टोस्टर्स हो गए, दैट ऑल आर बेस्ड ऑन heating effect of electric current. Note down बच्चे. इसमें बेसिकली बच्चे इन अप्लायंसेस में नाइक्रोम वायर यूज करते हैं. वायर यूज्ड इज नाइक्रोम. दैट वन इज अ alloy, mixture of different metals. Second application, electrical filament bulb. Electrical filament bulb. Now बच्चे ग्लास केस के अंदर today's we use LEDs, but before that we use electrical filament bulb. उसमें क्या होता था बेटा, when current is passed through this, filament gets heated up and basically this filament glow. जो लाइट प्रोड्यूस होती थी, ये फिलामेंट गर्म होने पे क्या होता था, ग्लो करने लग जाता था. दैट वन इज योर also based on heating effect of electric current. Filament is made up of tungsten. ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ बेटा. Filament is made up of tungsten. Note down it. Okay. Next third point बच्चे, that is in electrical fuse. और fuse wire. Now बच्चे, that is fuse wire is also based on
heating effect of electric current. That is made up of low melting alloy. It is made up of low melting alloy. बेसिकली बेटा इसमें क्या होता है, if the amount of current is fluctuate means to say that करंट की जो सप्लाई है सपोज थोड़ी ज्यादा होगी, जितनी अप्लायंसेस को नीड है उससे थोड़ी ज्यादा होगी. इन दैट केस आपका अप्लायंसेस क्या हो सकता है, अप्लायंस क्या हो सकता है, खराब हो सकता है. बट फ्यूज वायर बेसिकली क्या करती है, जब करंट की सप्लाई सपोज ज्यादा होगी, फ्लक्चुएट करने लगी या वोल्टेज फ्लक्चुएट करने लगी, तो उस केस में फ्यूज वायर क्या होती है, मेल्ट हो जाती है और सर्किट को क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है और आपकी पावर सप्लाई क्या हो जाती है, कट हो जाती है और इससे आपके गैजेट्स क्या हो जाते हैं, सेफ हो जाते हैं. सो दिस इज ऑल्सो based on heating effect of electric current. That one is the last topic of electricity. In the next lecture we just revise again and then we start with the next chapter. Just note down beta. If you want to write down, then write it बच्चे. When large current is passed, it gets heated up and melts. It gets heated up and melts. और सर्किट क्या हो जाता है आपका, सर्किट ब्रेक और पावर सप्लाई कट हो जाती है. पावर सप्लाई कट एंड गैजेट्स गेट प्रोटेक्टेड, या गैजेट्स और जो आपके अप्लायंसेस हैं they get protected. आपके गैजेट्स क्या हो जाते हैं, सेफ हो जाते हैं. नोट डाउन बच्चे. Okay, so this is all about the electricity. Chapter is finished. In the next lecture, we just do the revision with some numericals and then we start with the next chapter. Thank you and have a nice day. If you like my lecture, then please subscribe, like and share my YouTube channel, Prosperous Academy. Thank you and have a nice day. Hello students, hope you all are good. Today we do the recapitulation or revision of chapter 12, electricity. Just discuss the chapter in brief. So first term that we discuss is charge. Write down. Charge. First of all बच्चे charge है क्या? Property of body due to which it feels attractive or repulsive. And symbol used for charge is symbol
used for charge is Q. Means to say that charge is denoted by Q and unit or SI unit. Unit of charge is coulomb. Denoted by C. Now बच्चे चार्ज कितनी तरह का है? How many types of charges? There are two types of charges, positive and negative. Now in this case, like charges, like means to say that same. Like means to say that same. Same charges आपस में क्या करेंगे बेटा? रिपेल, एक दूसरे से दूर जाएंगे. On the other hand, unlike charge, means to say that different. वो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा? अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के पास आएंगे. Here positive positive or negative negative. Here positive negative or negative positive. Same charges repel each other, unlike or different charges attract each other. Write down बच्चे. Okay. Next term is beta potential difference. Potential difference. First of all, potential difference क्या है बेटा? Work done to move a quantity of charge from one point to another point. So V symbol है, symbol for potential difference is V, and formula used for potential difference, formula is equal to V is equal to W by Q. Now यूनिट की बात आती है बेटा. यूनिट क्या बन जाएगा यहां से? V is equal to W by Q है. W का यूनिट जूल, चार्ज का यूनिट कूलम, और दैट इज जूल पर कूलम. इसको बेटा 1 वोल्ट भी कहते हैं. 1 वोल्ट कब कहेंगे? When work done is 1 joule and quantity of charge transfer is 1 coulomb. Note down बच्चे. 1 volt क्या है आपका? When 1 joule of work is done to move a 1 coulomb of charge, that potential difference is said to be 1 volt. So here is a difference. आपको डेफिनेशन अगर पूछी जाती है कि पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, तो ये डेफिनेशन है. Work done to move a charge from one point to another. If you ask for the definition 1 volt, then you can define this: 1 joule upon 1 coulomb. Note down बच्चे. Okay. Next term is beta conductor and insulator. Conductor and insulator.
कंडक्टर क्या है बेटा? सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। सब्सटेंस विच अलाउ substance which allow electricity to pass through them। एग्जाम्पल बेटा क्या आ जाएगी इसमें? मेटल्स। मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर जस्ट इसके अपोजिट है, सब्सटेंस विच डू नॉट। आपने क्या कर देना है? एड विच के बाद डू नॉट। सब्सटेंस विच डू नॉट rest is same, which do not allow electricity to pass through them। एग्जाम्पल बेटा क्या आ जाएगी इसमें? वुड, प्लास्टिक। ना बच्चे कंडक्टर में करंट पास क्यों होता है? दैट इज कंडक्टर में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, बट इंसुलेटर में करंट इसलिए नहीं पास होता क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इलेक्ट्रॉन इसमें मूव नहीं कर सकते। नोट डाउन बेटा। ओके, नेक्स्ट टर्म इज बेटा वोल्टमीटर एंड एमीटर। वोल्टमीटर एंड एमीटर। वोल्टमीटर क्या है बेटा? इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। मेजर potential difference। Here ammeter used to measure current, used to measure current or value of current। Symbol for voltmeter is this one, and symbol for ammeter is this one। Voltmeter is always connected in parallel। Voltmeter is always connected in parallel। On the other hand, ammeter is always connected in series। Write down beta। One point is more, ammeter is low resistance and voltmeter has high resistance। Note down बच्चों। ओके, next term is electric current। Write down electric current। First of all, symbol for current is I।
symbol, that is I. And definition is rate of flow of charge with respect to time. Simple definition है rate of flow of charge. चार्ज क्या है बेटा? Q with respect to time. Time is T. So formula is I is equal to Q by T. now बेटा चार्ज का यूनिट कूलम है, टाइम का यूनिट सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर. यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर. फ्रॉम हेयर यू कैन डिफाइन 1 एम्पियर. 1 एम्पियर किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड. सो 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू सर्किट इन 1 सेकेंड, दैट करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर. राइट डाउन. व्हेन definition of 1 ampere, when 1 coulomb of charge flows through circuit in 1 second, that current is said to be 1 ampere. Note down beta. Okay. Next term is beta Ohm's law. So it is given by scientist or physicist George Simon Ohm. According to this, at constant temperature, potential difference is directly proportional to the current flowing through it, or V is equal to I R. V is equal to I R. From here you can derive different formulas. I is equal to V by R, or R is equal to V by I. Note down beta. Okay. From here beta, there is one more term, that is resistance. Symbol of resistance is R. सिंबल क्या है बेटा रेजिस्टेंस का? R. Unit of resistance is ohm, denoted by the symbol this one, on the name of scientist George Simon Ohm. From here you can define 1 ohm. So 1 ohm is equal to 1 volt. करंट का यूनिट क्या था? 1 एम्पियर. 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर.
So 1 ohm becomes when potential difference is 1 volt and current flowing through circuit is 1 ampere. That resistance is said to be 1 ohm. Note down beta. Okay. Next beta, factors affecting the resistance. Factors affecting the resistance. Means to say that resistance किस पे depend करता है? Resistance depend upon length of conductor, area of cross section, temperature. Fourth one is nature of material. Note down beta. Now next term is resistivity. Symbol for resistivity is rho. Symbol that is rho. RHO. Unit of resistivity is ohm meter. Ohm meter. Now beta, we know that R is directly proportional to length of the conductor, inversely proportional to the area of cross section. So from here becomes R is equal to L upon A when you combine first and second. R is directly proportional. Just correct here. R is directly proportional. Now this become equal to sign. R is equal to क्या आ गया बेटा rho L upon A, where rho is the resistivity of the conductor. Rho is equal to R, A इधर चला गया बेटा, L इसके नीचे आ जाएगा, that is R A upon L. From here you can derive the unit. रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है बेटा ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर. 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, यू आर लेफ्ट विद 1 मीटर, दैट इज ओम मीटर. सो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर. नोट डाउन बच्चे. Okay, fine. Next one is beta combination of resistance. Combination of resistance. Now resistance can be combined in two ways. First one is
series, second one is पैरेलल। सीरीज में फॉर्मूला क्या है बेटा, R इज इक्वल टू R1, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। पैरेलल में फॉर्मूला क्या है आपका, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ऑन द बेसिस ऑफ दिस बच्चे आपके पास न्यूमेरिकल भी हैं और इसका एक क्वेश्चन भी है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल इन कंपैरिजन टू द सीरीज। आई ऑलरेडी डिस्कस इन माय लेक्चर, जस्ट नोट डाउन बच्चे फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पावर। P बच्चे, अब बच्चे इलेक्ट्रिक पावर है तो P दैट इज वर्क डन अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। V क्या है बेटा, W बाई Q के इक्वल। W क्या आ गया, V इंटू Q। सो यू आर विद द फॉर्मूला P इज इक्वल टू V इंटू Q अपॉन T। Here just put small t। नाउ बच्चे V इज इक्वल टू क्या है आपका IR एंड I इज इक्वल टू Q बाई T। Q क्या आ गया यहां से IT। Just put the value of V and Q. You are with the formula P is equal to IR into IT upon T। T से T आपका कैंसिल, P is equal to I square R। If you put single Q is equal to IT, then with the formula P is equal to V into I into T upon T। T से T again cancel, that is formula is P is equal to V into R। From here बच्चे P is equal to V into I, you can define the unit of power। Unit of power is watt। Unit क्या है, watt। Now from here P is equal to V into I, you can define 1 वोल्ट। 1 वोल्ट क्या हो जाएगा बच्चे, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। When potential difference is 1 volt and current flowing through circuit is 1 ampere, that power is said to be 1 volt। Note down बच्चे। ओके, नेक्स्ट बेटा है इलेक्ट्रिक एनर्जी। E, that is P into T, formula for electrical energy। एनर्जी का यूनिट बेटा कोई भी एनर्जी हो, जूल ही होता है। यूनिट क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी का, जूल।
सो 1 जूल को डिफाइन कैसे करेंगे बच्चों? 1 जूल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम व्हेन पावर of electrical appliances is 1 volt and used for 1 second. That electrical energy consumed is said to be 1 joule. Note down बच्चे. Okay. Next is commercial unit of electrical energy. Commercial unit of electrical energy. Kilowatt hour. That is the commercial unit. Of electrical energy. और बेटा 1 किलोवाट आवर का जूल के साथ क्या रिलेशन है? 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल. नोट डाउन बच्चे. ओके. लास्ट टॉपिक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. फॉर्मूला दिस इज H is equal to I square RT. Symbols have their usual meaning. I current, R is resistance, T is time. Now बच्चे इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी हैं. I already discussed in my lecture. हीटिंग इफेक्ट में बच्चे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आप जो गैजेट्स यूज करते हो, हीटर हो गया, गीजर हो गया आपका, इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज इन द मीटर बॉक्स, और जो आपका बल्ब का फिलामेंट है, इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट, that is also based on heating effect of electric current. Note down बच्चे. ओके. नेक्स्ट बच्चे डायग्रामेटिक सिंबल्स हैं. फर्स्ट वन इज दैट इज योर सेल. सेल के लिए आप क्या सिंबल ड्रॉ कर सकते हो? दैट इज दिस वन, पॉजिटिव, नेगेटिव. नेक्स्ट बैटरी है. बैटरी क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल. जब आप एक से ज्यादा सेल को कनेक्ट कर देते हो, दैट बिकम्स बैटरी. सो सिंबल इज दिस वन, पॉजिटिव, नेगेटिव. नोट डाउन बेटा. नेक्स्ट इज प्लग की और स्विच ओपन. प्लग की और स्विच ओपन. That is this one. Next is switch closed
that is this one. Note down बच्चे. Some more symbols are there. Just draw resistance बच्ची. Diagrammatic symbol is this one. Variable resistance. That is this ammeter, that is C, and voltmeter. That is this one. Note down बच्चे. Variable resistance के लिए one more symbol is there. Just draw. ये बेटा आप ऐसे भी शो कर सकते हो. Just draw the symbols. Okay, fine, beta. This is all about the chapter electricity in brief. If you want to connect in explanation, then you can see my lectures from first lecture. And बच्चे, one more lecture for numericals. Then we start with the next topic or next chapter, magnetic effects of electric current. Chapter number 13. Thank you and have a nice day. If you like my lecture, then please subscribe, like and share my YouTube channel Prosperous Academy. Thank you and have a nice day. Hello students, hope you all are good. Today we discuss about the numericals of chapter 12, electricity. Write down the first numerical. A current of 0.5 ampere is drawn by filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge. Find the amount of electric charge. So numerical solve करने से पहले बच्चे you just write down the given values. Now आपके पास given values क्या है बेटा? Current that is 0.5 ampere, time that is 10 minutes, और आपको find out क्या करना है? Electric charge. So answer is, first write down the given values.
current, you already know that current is represented by I, that is equal to 0.5 ampere. Now बच्चे time, that is t, is equal to 10 minutes. Now बच्चे आपका टाइम मिनट्स में गिवन है, you have to convert it into seconds. So here you know that 1 minute is equal to 60 seconds. So 10 minutes is equal to 10 into 60 seconds. So टाइम क्या हो गया आपका 600 सेकेंड. नाउ आपको फाइंड आउट क्या करना है बच्चे, चार्ज. चार्ज दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय Q विद क्वेश्चन मार्क. नाउ आपने गिवन वैल्यूज बच्चे नोट कर ली. जस्ट थिंक अबाउट द फॉर्मूला. You know that from the definition of current, I is equal to Q by T. From here Q is equal to क्या आ गया बच्चे आपके पास, IT. Now बच्चे डायरेक्ट आप वैल्यूज पुट कर दो I और T की. Q is equal to 0.5 into टाइम कितना है आपके पास 600 second. You just remove the decimal. 5 upon 10 into 600 second. 0 से 0 बेटा आपकी कैंसल. You are left with 5 into 60. So 5 into 60 that is चार्ज की वैल्यू क्या आ गई 300 कूलम और Q is equal to 300 C भी मेंशन कर सकते हो आप. जिस फिजिकल क्वांटिटी को आप फाइंड आउट कर रहे हो बच्चे, इन द एंड आपको उसका यूनिट अप्लाई कर देना है. सो चार्ज क्या आ गया आपके पास 300 कूलम. नोट डाउन करना है बच्चे. Okay. Next numerical. How much work is done in moving a charge of 2 coulomb across 2 points having potential difference 12 volt. आंसर. नाउ गिवन वैल्यूज बच्चे आपके पास क्या है, चार्ज दैट इज 2 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट. फाइंड आउट क्या करना है आपको, वर्क. नाउ पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V. पोटेंशियल डिफरेंस V is equal to 12 volt. Charge that is Q that is 2 कूलम. फाइंड आउट आपको क्या करना है, वर्क that is with question mark. Now just think about the formula. You know the definition of potential difference.
that is V is equal to W by Q. From here W is equal to V into Q. If you know the formula directly, then you can apply, but if you don't know, then just go with the basic formula and then derive the formula which is used in the numerical. So W is equal to क्या आ गया बच्चे, पोटेंशियल डिफरेंस आपका कितना है 12, चार्ज कितना है आपका 2, सो W क्या आ गया 12 2 जा 24 जूल और W is equal to 24 G. Note down the numerical बच्चे. ओके थर्ड न्यूमेरिकल है बच्चे आपका रेजिस्टेंस ऑफ 15 ohm, a resistance of 15 ohm has a current of 5 ampere, has a current of 5 ampere flowing in it, 5 ampere flowing in it. Find the amount of potential difference across its ends, across its ends. Note down बच्चे. Now आपके पास given values क्या है बच्चे, resistance that is 15 ohm, करंट कितना है 5 एम्पियर, आपको क्या फाइंड आउट करना है पोटेंशियल डिफरेंस. सो राइट डाउन द गिवन वैल्यूज. आंसर इज रेजिस्टेंस that is R is equal to 15 ohm. Current that is I, that is 5 ampere. फाइंड आउट करना है बच्चे आपको पोटेंशियल डिफरेंस. दैट इज V फाइंड आउट करना है, दैट इज विद क्वेश्चन मार्क. Now बच्चे you know that according to Ohm's law V is equal to I R. डायरेक्ट वैल्यूज आप पुट कर सकते हो. R की वैल्यू है आपके पास, I की भी है. सो I दैट इज 5 इंटू R कितना है आपका 15. सो 15 5 का 75. 75 क्या आ जाएगा वोल्ट. सो V पोटेंशियल डिफरेंस आपका कितना हो गया 75 वोल्ट. नोट डाउन बच्चे. ओके
न्यूमेरिकल फोर्थ है बच्चे आपका द पोटेंशियल डिफरेंस between the terminals of an electric iron is 240 volt and the current is 5.0 ampere or 5 ampere and the current is 5 ampere. Find the resistance of electric iron. Find the resistance of electric iron. Now बच्चे given values write down. Answer is potential difference 240 volt. So potential difference आपका V, that is 240 volt. In the exam you can write directly with the symbol V. ये आपको इजी हो जाए इसलिए मैंने साथ में फिजिकल क्वांटिटी भी मेंशन कर दी और उसका सिंबल भी मेंशन कर दिया. इन द एग्जाम यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन द सिंबल और V इज इक्वल टू 240 वोल्ट. सेकेंड करंट गिवन है बच्चे आपको. करंट आपका दैट इज I 5 एम्पियर. नाउ आपको क्या फाइंड आउट करना है बच्चे? रेजिस्टेंस. सो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्वेश्चन. नाउ यू नो द फॉर्मूला दैट इज ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू I R. अब बच्चे देखो आपको यहाँ पे R फाइंड आउट करना है. सो R क्या बन गया? R इज इक्वल टू V अपॉन I. Now just put the values, that is 240 upon 5. So कटिंग हो गई बच्चे इसकी 5 8s 5 4s are 20. You are left with 4 and then 0. 5 8s are 40. So R is equal to 48 ohm. Note down बच्चे. ओके. क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चे आपका. When 12 volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of there is a current of 2.5 milliampere.
find the amount of resistance. Find the value of or amount of, find the value of resistance. now बच्चे आंसर गिवन है आपको पोटेंशियल डिफरेंस, that is V 12 वोल्ट। करंट गिवन है बच्चे आपको मिली एम्पियर में, that is I is equal to 2.5 milliampere. You have to convert it into ampere, so that becomes 2.5 into 10 raised to power minus 3 ampere, because 1 milliampere is equal to 1 upon 1000 ampere, or you write it as 10 raised to power minus 3 ampere. नोट डाउन बच्चे। नाउ बच्चे आपको क्या फाइंड आउट करना है? रेजिस्टेंस। So that is with question mark, or R is equal to question mark. Now think about the formula. You know that Ohm's law के according V is equal to IR, or R is equal to V by I. Now here just put the values. Potential difference कितना है? 12 volt. And आपका current, that is 2.5 into 10 raised to power minus 3. Now बच्चे सॉल्व करते हैं। इसका डेसिमल रिमूव किया, इसके नीचे 10, that is रिवर्स हो गए 12 के साथ आ जाएगा। 12 into 10 upon 25 into 10 raised to power minus 3. Now that is equal to 120 upon 25, और ये 10 raised to power minus 3 को बेटा ऊपर ले जाएंगे, that becomes positive 10 raised to power 3. Now when you divide 120 by 25, when you divide 120 by 25, you got 25 fours are 100. You are left with 20. I just mentioned here 120, that is 25. 25 fours are 100. You are left with 20. Here 0, decimal, 25 eights are 200. That is cut. Remainder 0. So resistance 4.8 into 10 raised to power 3 ohm, or R is equal to 4.8 into 10 raised to power 3 ohm. Note down बच्चे। Okay. Now बच्चे अब तक आपने जो न्यूमेरिकल किए that are related with the potential difference, current and resistance. Now the numericals that are based on series and parallel combination. Series and parallel. Combination.
बच्चे इन न्यूमेरिकल को करने से पहले एक फैक्टर है कि व्हेन यू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ सीरीज, रेजिस्टेंस, ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीज होगा। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। When you apply the formula of series, ओवरऑल रेजिस्टेंस और टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑलवेज इंक्रीज होगी, ज्यादा होगी। एंड व्हेन यू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ पैरेलल, दिस वन इज सीरीज, रेजिस्टेंस इन सीरीज, यू ऑलरेडी डन दैट। और पैरेलल में बच्चे आपके पास वैल्यू डिक्रीज होगी रेजिस्टेंस की, दैट इज 1 अपॉन R is equal to 1 upon R1, 1 upon R2, 1 upon R3। सीरीज में वैल्यू रेजिस्टेंस की इंक्रीज होगी, पैरेलल में डिक्रीज होगी। नोट डाउन फॉर द फॉर्मूला, देन वी स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल। Okay. Write down the numerical. How can three resistance? Question number 6. How can three resistance two ohm, 3 ohm and 6 ohm, 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm, connected to give total resistance of, connected to give total resistance of फर्स्ट है बच्चे आपके पास, दैट इज योर 4 ओम। सेकेंड है 1 ओम। नाउ क्वेश्चन है आपका कि आप इन रेजिस्टेंस को कैसे कंबाइन करोगे ताकि आपका फर्स्ट केस में आंसर जो है 4 ओम और सेकेंड केस में आपका आंसर जो है 1 ओम है। नाउ अब बच्चे यहां रेजिस्टेंस की वैल्यू लिटिल बिट इंक्रीज है, सो इसमें सीरीज में भी हो सकता है और पैरेलल में भी। सो आप क्या करोगे बच्चे, फर्स्ट के लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए आंसर, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द डायग्राम। ना बच्चे आपका रेजिस्टेंस 3 ओम एंड 6 ओम क्या आ जाएगा, पैरेलल, और 2 ओम यहां। नाउ यू सॉल्व दिस, दैट इज 1 अपॉन आरपी। आरपी क्या है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। सो पैरेलल में आपके रेजिस्टेंस कौन कौन से हैं, 3 ओम एंड 6 ओम। सो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और you write 1 upon 3 plus 1 upon 6. So 3 और 6 का एलसीएम बच्चे, that is 6. Now मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, जो डिनोमिनेटर है आपका उसको आप 6 को जो है एलसीएम को डिनोमिनेटर के साथ क्या करोगे, डिवाइड करोगे। देन जो डिवाइड करके आंसर आएगा उसको न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। सो 6 को जब 3 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया, 2, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 जा 2। 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1,
1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, दैट इज 2 प्लस 1 और दैट इज इक्वल टू 3/6 और 3 1 द 3, 3 2 द 6, दैट इज 1/2 ओम। अब 1/RP है, so 1/RP is equal to 1/2 ohm. From here RP becomes 2 ohm. नाउ आपके पास बच्चे देखो सीरीज में आ गया, इन दोनों का आंसर क्या आ गया 2 ओम और ये 2 ओम ऑलरेडी है, सो RS इज इक्वल टू R, इसको टोटल को RP कंसीडर कर लेते हैं, इसको R3 कंसीडर कर लेते हैं। सो R3 प्लस RP, यहां पे आप कंसीडर कुछ भी कर सकते हो, 1 भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। सो R3 कितना है बच्चे 2 ओम प्लस 2 ओम, आंसर बिकम्स 4 ओम विच इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। सो आपने कैसे कंबाइन किया बच्चे, सीरीज और पैरेलल दोनों, नोट डाउन बच्चे। देन वी स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट। ओके, नाउ सेकंड पार्ट में बच्चे देखो वैल्यू क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। सो यहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि रेजिस्टेंस को आप कैसे कनेक्ट करोगे पैरेलल में। सो व्हेन यू कनेक्टेड इन पैरेलल, जस्ट ड्रॉ द डायग्राम। टू ओम 3 ओम एंड 6 ओम, 2 ओम 3 ओम 6 ओम। सो पैरेलल का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा बच्चे, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1, 1/R2, 1/R3। just put the values 1/2, 1/3, 1/6। 2, 3 और 6 का एलसीएम बच्चे क्या आ गया आपके पास, दैट इज 6। आई अगेन रिपीट, एलसीएम को डिनोमिनेटर के साथ क्या करना है, डिवाइड करना है, डी से याद रखना। सो व्हेन यू डिवाइड 6 by 2 you got the answer 3, 2 3 the 6, और जो आंसर आया डिवाइड करके उसको न्यूमरेटर के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। सो 2 3 the 6, 3 1 the 3, 3 2 the 6, 2 1 the 2, 6 1 the 6, 1 1 the 1. So you are with 6/6, that is 1/1, or you write it as RP is equal to 1 ohm. That is the required answer. Note down बच्चे। Okay, fine. Next numerical. What is the highest and the lowest? What is the highest and the lowest resistance
that can be secured by the combination of four coils. That can be secured by combination of secured by combination of four coils. वैल्यूज हैं बेटा आपकी 4, 8, 12, 24, 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm and 24 ohm. नाउ बच्चे आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट के रेजिस्टेंस सीरीज में क्या होगा, इंक्रीज होगा. मतलब मीन्स टू से दैट आपको यहां से आइडिया हो गया कि हाईएस्ट के लिए आप क्या करोगे, इन रेजिस्टेंस को सीरीज में अप्लाई कर दोगे सीरीज फॉर्मूला में. और लोएस्ट के लिए मैंने बता दिया आपको, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि पैरेलल में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी. सो लोएस्ट के लिए आप इनको क्या कर दोगे, पैरेलल में कंबाइन कर दोगे. सो सीरीज के लिए बच्चे आरएस रेजिस्टेंस इन सीरीज, 4 रेजिस्टेंस है, सो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4. That is 4 plus 8 plus 12 plus 24. You are with the answer. That is RS is equal to 48 ohm. That is the highest resistance. Highest लोएस्ट के लिए 1/Rp is equal to 1/R1, 1/R2, 1/R3, 1/R4. Just put the values 1/4, 1/8, 1/12, 1/24. सो बच्चे 4, 8, 12 एंड 24 का एलसीएम आपके पास 24 आ गया. डिनोमिनेटर के साथ आप एलसीएम को क्या कर दोगे, डिवाइड. जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर 1 के साथ मल्टीप्लाई. सो 24 को 4 से डिवाइड करके 6, सो 6 1 जा 6 प्लस 8 3 जा 24, 3 1 जा 3, 12 2 जा 2 1 जा 2, 24 1 जा 24, 1 1 जा 1. So you are with 6 plus 3 9 11 12. 9 to 11 plus 1 12 upon 24, और 12 1 जा 12, 12 2 जा 24. That is 1/2. 1/Rp किसके इक्वल आ गया, 1/2. So Rp किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, that is 2 ohm. नोट डाउन बच्चे.
ओके नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चे आपका you are given three resistance. You are given three resistance one ohm, 2 ohm, 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm. Show by diagrams how with the help of these resistance. Show by diagrams how with the help of the resistance, how with the help of these resistance you can get first part is 6 ohm, second is 6 by 11, third is 1.5 ohm. So first part 6 ohm overall resistance क्या हो रहा है increase हो रहा है. So directly RS is equal to R1 plus R2 plus R3, that is 1 2 3, that is 6 ohm. So इस केस में फर्स्ट पार्ट में आप इन थ्री रेजिस्टेंस को क्या कर दोगे सीरीज में कंबाइन कर दोगे. That is this one 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm. Now second part के लिए बच्चे 6 by 11, so 1 upon Rp is equal to 1 upon 1 plus 1 upon 2 plus 1 upon 3, that is LCM 6. 6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 6 और 6 1 द 6, 2 3 द 6, 3 1 द 3, 3 2 द 6, that is आपके पास वैल्यू क्या आ गई 6 plus 3 9 plus 2 11 upon 6, that is equal to 1 upon Rp. अब Rp को जब रिवर्स करेंगे तो क्या हो गया बच्चे Rp is equal to इधर भी रिवर्स हो जाएगा, that becomes 6 by 11, which is a required answer for second part. So in this case you combine these resistance in parallel. Draw the diagram. That is 1 ohm, 2 ohm and note down बच्चे. Okay. Now थर्ड पार्ट के लिए बेटा
आप दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में, दो रेजिस्टेंस को सीरीज में with the third one parallel. So diagram for the third part is that is this one, or you can connect with it battery, otherwise just draw the diagram without battery. So वैल्यू क्या आगे बच्चे आपके पास 1 ohm, 2 ohm और 3 ohm. Here two resistance are in series with one parallel. So first of all series के लिए बच्चे इसको R1 कंसीडर कर लेते हैं, इसको R2. So RS क्या आ गया बच्चे आपके पास R1 plus R2, that is 1 plus 2, that is equal to 3 ohm. Now 3 ohm इसके साथ पैरेलल में है, so RP 1 upon RP is equal to 1 upon RS plus 1 upon R3. इसकी वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं R3. So 1 upon 3 plus 1 upon 3, that is equal to 2 upon 3. और RP क्या आ गया बच्चे 3 upon 2, that is equal to, when you divide 3 by 2, 1.5 ohm, or RP is equal to 1.5 ohm. That one is the required answer. Note down बच्चे. Okay. नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चे आपका that is based on electric power. An electric iron radon, an electric iron has a rating of 750 watt, has a rating of 750 watt, 220 volt, 220 volt. Calculate current passing through it. Calculate, फर्स्ट पार्ट है बच्चे आपका करंट पासिंग थ्रू इट. सेकेंड इज resistance when in use. Resistance when in use. Now again write down the given values बच्चे. Answer is power rating बच्चे आपको given है, that is P. Power rating, that is P 750 watt. पोटेंशियल डिफरेंस V भी गिवन है, V इज इक्वल टू 220 वोल्ट. आपको फाइंड आउट करना है करंट I, एंड रेजिस्टेंस R. Now बच्चे just think about the formula. You know that P is equal to V into I. P is equal to V into I. आपको फाइंड आउट क्या करना है करंट. So from here I is equal to P by
V। नाउ आपके पास वैल्यूज हैं बेटा पावर 750 अपॉन 220। सो 0 से 0 कैंसल। व्हेन यू डिवाइड 75 बाय 22, 22 3 the 66, that is you are left with 9. Now just put 0 here, decimal, 22 4 the 88, 2 just left here, that is I is equal to 3.4 ampere. नाउ करंट की वैल्यू आगे बचे आपके पास, आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। V आपको ऑलरेडी पता है, सो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर, सो R इज इक्वल टू V अपॉन I। V आपके पास है 220 अपॉन 3.4। You are with the answer when you divide it, that is R is equal to 64.7 ohm. You just try the calculation. If you have any problem, then you can contact me. Note down बच्चे। Okay, fine. नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा आपका, which uses more energy, which uses more energy। A 250 watt TV set in 1 hour, 250 watt a 250 watt TV set in 1 hour, or a 1200 watt toaster, or 1200 watt toaster in 10 minutes। So energy used by TV set बच्चे, आंसर इज E is equal to क्या आ गया बेटा, P into T। You know the formula, energy is equal to power into time. So you got 250 into 1, that is 250 watt hour। Now बच्चे, here time is in minute, you have to convert it into hours, because here we calculate it in hours। So 1 minute, first of all 1 hour किसके इक्वल है बच्चे, 60 मिनट। So 1 minute किसके इक्वल आ गया, 1 upon 60 hour। So that is your 10 minute is equal to 10 upon 60 hour।
Now just apply the formula E2. Here you consider E1. E2 किसके लिए है? टोस्टर के लिए. That is for TV set. ये टीवी का, that is toaster. E2 is equal to P into T. पावर कितनी है इस केस में? 1200. That is 1200 into 10 upon 60. 0 से 0 कैंसिल. 6 2 जा 12. साथ में 2 zeros, that is 200 watt hour. So which use is more? That is this. Note down the chip. Okay, fine. So this is all about the numericals of chapter 12, electricity. Today we finally close this chapter. In the next lecture we start with the chapter number 13. That is magnetic effects of electric current. Magnetic effects of electric current. Just go through this chapter or do the reading of this chapter from NCERT book. And if you like my lecture, then please subscribe, like and share. Prosperous Academy, that is the name of my YouTube channel. Thank you and have a nice day.